Are you able to see my screen? Yes, sir. Okay. So what we have seen yesterday? We What? have seen, sorry. Okay, sir. First of all, we in yesterday's class we have seen about this polymorphism, right? The method overloading and method overriding. Then we have seen the encapsulation concept. This concept we have seen because the example we have considered for the encapsulation was class itself, right? और class हमने day one से देखा है exactly how we are using the data variable and data methods. Okay, then we have started with the new concept abstraction, and just we have seen some rules while working with the abstraction. Okay, so again I'm going to repeat the rules and we will see the total concept today. Okay, okay, so abstraction I'm saying as a data heading also. Okay, I will tell you the reason exactly. Wait for some time. Okay, it is also called as data heading. Similarly, encapsulation was called as a data binding, right? We are going to bind the data, right? We are going to bind the data. Now, what the rule one we have seen is we have to use the abstract keyword while creating the class. Okay, while creating the class we have to use the abstract keyword. These are the keywords. And what is the meaning of keyword in Java? What is the meaning of keyword in Java? It has specific feature, a Yes. specific meaning. Okay. Yeah. It has a specific or predefined meaning. Okay. We cannot change that. We are using that word. That means we are accepting the predefined meaning itself. Okay. And these are reserved keywords. Means which can be used in Java as their like own keyword. Okay. So abstract is one of the keyword. Okay. And that we are using before the class. अब तक हमने जो भी क्लास क्रिएट किया था उसके सामने हमने कभी भी एब्स्ट्रैक्ट ये कीवर्ड यूज नहीं किया था. दैट वाज कंसिडर्ड एज अ रेगुलर क्लास. ओके, बट नाउ to work with abstraction I have to use the abstract keyword before the class. Before the class. Okay. Second, inside that abstract class I should define a method it also with keyword abstract. उसके लिए भी क्या चाहिए? abstract keyword define होना चाहिए. ओके, देखिए क्लास के पहले भी मैं abstract keyword यूज कर रहा हूँ. अगेन inside the class I will define some methods, और मेथड के पहले भी मैं abstract keyword यूज कर रहा हूँ. अब रेगुलर मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या डिफरेंस है? सो यहाँ पर जब मैं एब्स्ट्रैक्ट वॉइड और इन मेथड नेम वॉट एवर यू वांट, अगर आप जैसे यहाँ पे मैंने ऐड एक मेथड लिखी है तो इसके बाद हम क्या करते थे रेगुलर मेथड में? वी वर गिविंग द बॉडी, राइट, इन करली ब्रेसेस वी वर गिविंग द बॉडी, और उसमें हम कुछ स्टेटमेंट या जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो लिख रहे थे. फॉर एग्जाम्पल M1 मेथड है तो inside that curly braces we were having the instruction as print M1 method is executed, if you remember, right? But यहाँ पे मैं कुछ implementation नहीं दे रहा हूँ. Okay, after the method name with round bracket just semicolon I am going to end the sentence, right? So there is no implementation provided in the method. Okay, but इन अ नेक्स्ट क्लास. ओके, इस क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जिसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट किया है, नॉट दैट क्लास. इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिफाइन द बॉडी और we are going to define the implementation of that method. That is rule number 2. Okay, and keep remember, like in this abstract class at least one method should be abstract. आप बाकी के मेथड जो भी है वो रेगुलर कर सकते हो. ओके, दैट इज another issue, we are not going to deal with that, but at least one method should have the keyword abstract with it. Okay, और सिंपल abstract क्लास में at least one method abstract method चाहिए.
Okay, in abstract class there should be at least one abstract method. Okay, अब उसका implementation मतलब क्या करूंगा? I will define the body, but it is happening in another class. Okay, in next class. That is rule number 2. And for abstract class we are not in a position to create an object. Okay, for abstract class we are not able to create its object. ये तीनों रूल में किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट इन दिस 3 रूल्स? No, sir. No? Okay. Are you able to see my screen? Paint screen? Yes, sir. Okay. Okay. Now listen carefully. Okay, we will deal with the concept now. I want to create a class. Okay, with the keyword abstract. Okay, this is the keyword abstract. Then our regular class, like class, मान लीजिए I'm going to create a class name with a bank. Okay, I'm going to create an abstract class. See the class, its keyword is abstract, name of the class is a bank. Okay, then we have to provide the body for the class, like body of the class. Okay, this is your body of the class. Okay, inside the body I have to define the methods, abstract method, and again these methods should also have the keyword abstract with them. So again abstract keyword, and this time it is for method abstract, void, and any method. For example, I am giving a method name as a credit. Okay, this is the method. Now I am not giving any implementation, है ना? मैं इस मेथड के लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहा हूँ. सो आई विल सिंपली एंड दिस सेंटेंस, है ना? मैंने यहाँ पे कोई कर्ली ब्रेसेस देके उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया है मेथड का. सिमिलरली आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर मेथड, abstract void debit method, for example. Okay, so here what we are doing, like as per rule number 1, I'm going to use the keyword abstract in front of the class. So now this class is the abstract class, it's not like regular class. Okay, that is one thing. Before the method I'm going to use the keyword as the abstract. Okay, I'm going to use the keyword as the abstract, and I'm not going to define any body or implementation for the given method. Okay, now what is the next concept we are seeing? Like we can implement these method in next class. So okay, now I'm going to define the next class. Now this is a normal class, okay, a regular class. I have not used the keyword as abstract. So class, for example, I'm using as the HDFC. Okay, HDFC. Now what I will do is, for example, now I am going to define these method inside this class. Means अब मैं इसका क्या करूंगा, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर दूंगा, है ना? यहाँ पे मैंने तो बस क्या किया है, मेथड को बस बताया है, बट उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. अब उसको मैं कंप्लीट या उसकी बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट करूंगा, नेक्स्ट क्लास में. ओके, हियर वी कैन गिव इट. सो हियर the method name, now it become public void. The method name is what? Credit. Example, it's a credit. The method name. Now this time I am going to define the body by using the statements, है ना? अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ. इसका मतलब क्या होता है? प्रिंट मतलब जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा इनसाइड दिस, इट विल क्रिएट द मेथड बॉडी, है ना? ये मेथड की बॉडी है. अब
क्रेडिट मेथड, इसमें मुझे जो भी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. ओके. नेक्स्ट, अगेन I have again one more method, that is what, the debit. So I will make completion for that as well. Public void debit. This is your method. Now I am going to give the body. The body means statements. I am going to type it. Okay. I am going to give some statements. Now again, completion of this method. And at the end, completion of your class as well, है ना. This is the class. ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्लास को डिफाइन कर रहा है. ओके. नाउ here that like we are using these methods, in this class. Which class? Class HDFC. Now if I want to use the same method in any other class, okay, in any other class, for example अब मुझे कोई अलग क्लास में यूज करनी है, so I can create one more class. Consider I am creating a class as ICICI. Okay, ICICI. Now again, okay, wait. Okay. Now here also what I can do is I can give the body for the class and I am going to define the completeness of your methods. Same method. क्या था method number 1? Public void credit. Okay. Now this is the method. Now we need to implement this. So again, simply what I'm giving? I'm giving the statement. Okay. I'm giving the statement. Similarly for next method, public credit, sorry, it is debit. This is the method. I want to give the body, or I want to give the complete implementation of the body. Okay. Okay, sorry. Okay. Now what your understanding from this is, we have created one abstract class. Okay, and its abstract method we are going to complete in the next classes. So is it like we cannot we can implement that in one class or more than one class? यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेथड दोनों सेम ही है, क्रेडिट डेबिट. मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया एक बार HDFC में, इस क्लास में, और उसको एक बार इम्प्लीमेंट किया है मैंने ICICI में. ओके. अब मुझे यही मेथड कंप्लीट करने थे, बट हाउ वी कैन एक्सेस द मेथड फ्रॉम दिस क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास. कोई अदर क्लास से मुझे अगर कुछ मेथड या डेटा टाइप एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? Inheritance. By using the keyword Extend. So here what I will do, extends which class? Class name is bank, right? We have given the name as a bank. Actually वो ऊपर गया है, so I'm not able to show you, but I will show in coding as well. Okay. यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट किया था, abstract class with name bank. So I'm just trying to extend that class bank itself. Okay. Here also for this newly created class I can extend the abstract class with a name as a bank, and I can use that method, right? तभी तो मैं ये मेथड यूज कर पाऊंगा. क्रेडिट डेबिट, ये जो दोनों मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने कहाँ क्रिएट किए थे? इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास विथ नेम बैंक. एनी डाउट इन दिस कंसेप्ट? यहाँ पे किसी को डाउट है? यस, नो भाई? यस सर. बोलिए, क्या डाउट है? सर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट ये मेथड क्लास HDFC में भी डिफाइन कर सकते हैं क्या? Extract method? यस सर. No, because this class is a regular class. If we are defining it is as a abstract class HDFC, then only we can give at least one abstract method. रेगुलर क्लास में मैंने अभी तक कभी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज नहीं किया था ना, क्योंकि वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट चाहिए होता है. योर क्लास शुड बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, देन ओनली इट इज शोइंग कि उस क्लास, जैसे आपने क्लास को अगर नाम देती है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से,
तो उसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग ये होता है कि आपके क्लास में एटलीस्ट वन मेथड तो क्या होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट। अब मैंने जब रेगुलर क्लास नाम दिया है तो इसमें मैं कोई भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना सकता हूँ। आई शुड गिव इट एज अ कॉन्क्रीट मेथड, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन देना मुझे कंपल्सरी होता है। ओके सर। गॉट इट? Okay, so if you are good with the concept, we will try to make it. Okay. Okay. Okay, in polymorphism only, I'm going to create one class. I'm going to create one class. Okay. Class name I'm giving as a test bank. Okay, I have created one class with name test bank. Okay, the package is what? Polymorph. Okay, now what we need to do, the first step, we need to create an abstract class. है ना? So the keyword we have to use abstract. Okay, you can see it's highlighted, that means it's a predefined meaning. Okay, इसका predefined meaning है, that's why it is called as a keyword. Abstract, I'm creating one class, abstract class, for example bank. Same example लेते हैं. Okay, now in that bank we have specified the abstract methods, right? मुझे मेथड के सामने भी क्या लगाना है? abstract keyword. So abstract void the method we have created first, consider it as credit. So it's a credit method. I'm not giving any body to the method. It's a simply abstract method, है ना? मैं इसका कुछ भी implementation नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, right? Similarly, I will create one more abstract method. Okay. Abstract void debit. So I have created two abstract method in this abstract class name bank. जिसका नाम क्या है? Bank. Okay. So this is the abstract class body. Outside this class, we need to implement these methods. Credit method और debit method को मुझे क्या करना है? Implement करना है. So for that purpose, I am creating one more class. That is class, मान लीजिए HDFC. Okay. The class HDFC. Now here in this class I want to implement these methods. Implement मतलब अब उसको मुझे क्या करना है? कुछ body define करनी पड़ेगी. Okay. So I'm going to define it like public void. The first method I'm taking as a credit. Okay, this is my method credit. Now what I'm giving here, I'm giving the body for that method, है ना? अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे कुछ बॉडी देना है. So I'm giving one message as a for example HDFC credit. Okay, अब मैंने यहाँ पे बॉडी दी है, मतलब I'm going to implement it. मेथड में मुझे जो भी एग्जीक्यूट परफॉर्म करना है उसकी मैं बॉडी दे रहा हूँ. So this is the body for this particular method. Okay. Similarly, the second method we have created in the abstract class, that was the debit method. Okay, so here I will complete that method also. Public void debit, this is your method, and I'm going to give the body. Okay, so just defining something as a to identify HDFC debit. Okay, so we have created one class. This is the class body. Inside the class we have done the implementation for the abstract method which we have created. जो credit नाम का मैंने बनाया था abstract method और debit नाम का, उसको मैंने complete किया है. Now these are not the abstract method. Okay, देखो यहाँ पे abstract keyword भी नहीं है और इसको मैंने body specify करके some statement और some instruction we have given inside the method body. यहाँ पे मैंने simple एक sentence दिया है, मान लीजिए, and this complete is what? This is the complete your class. Okay. Now
Is that like we can use this method in one class only? No, right? We can use this method in as many as class which we want. मुझे और एक क्लास में उसको इम्प्लीमेंट करनी है. So again I am creating one more class, sorry, class ICICI. Okay, again same, for example, I want to give the implementation for the same body. Okay, same method. So it's a public void credit. Now what we can make the difference here is, see method तो same ही है आपकी, with abstract method same है. अब मुझे यहाँ पे implementation में कुछ भी दे सकता हूँ as per my requirement. मेरी requirement यहाँ पे कुछ भी हो सकती है. So I am giving here as a ICICI credit. Okay, this is the one method which I have completed in this. Again the second method we have, right, the public void debit. This is your method. I'm going to define the body as so see what I have done. I have created abstract class, created abstract method. In next class we have created like one class SDFC and again one more class ICSA, and in these two classes I want to complete these methods. So you know, right, if we want to access any method from another class, what we need to do is we need to inherit that, right? So that's why we are using the keyword extends. And which class we are going to extend? That is the bank abstract class which we have created, right? This class. Similarly, for this ICICI class, I am going to extend the abstract class name with bank. Okay. Now, if I will execute this, what I will get? If I will execute this code, what should I get? Nothing. Very good. Why will not get nothing? Main method we are not defining yet. Yes. हमने अभी तक मेन मेथड डिफाइन नहीं किए कोई भी क्लास में. नॉट इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नॉट इन द HDFC और नॉट इन दिस ICI. तो बोलिए मुझे कहाँ डिफाइन करनी पड़ेगी मेन मेथड? वेयर आई कैन डिफाइन इट? Test bank. In test bank, right? Because see, which we have created, the first class was a test bank and it is a public class. Okay, so that's why we are going to define our main method here. So what is the syntax for main method? Public static void main inside the bracket string args the array. So this is your main method, okay, which we have defined the main method. Now what is the third rule we have seen? No object creation for the abstract class. No object creation for the abstract class. Okay, so can we create the object for HDFC class? Yes. Can we create the object for ICICI class? Definitely, right? For both class we can. These are not abstract. मैंने कुछ abstract keyword लिखा नहीं दोनों के सामने, right? These are the regular classes. So definitely I can create the object of these classes. So what is the syntax to create an object? Class name. Class name, any reference variable. For example, I am taking here SD is equal to new, again the class name and the brackets. Okay, now HD, this is the variable I have created for this object. Now I want to use the methods. Can you see? I can use the method credit, debit. These are the user defined method, right? Yes. अब ये मेथड सबसे पहले मैंने डिफाइन कहाँ किए थे? इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. बट वेयर आई हैव मेड इट एज अ कॉन्क्रीट, उसको कंप्लीटनेस मैंने कहाँ पे दिया? सेम HDFC क्लास में. So if I am clicking on this method, it will call the credit method from HDFC class. Similarly, second,
If I want to use the debit method, I can call that also. अब मैं अगर यहाँ पे इसको कॉल करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए आउटपुट? HDFC credit, HDFC debit. ओके ओके, बिकॉज देखिए मैंने अभी तक आईसीआईसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, राइट? आई हैव नॉट क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड क्लास, दैट इज आईसीआईसीआई, और मैंने बस एचडीएफसी की दोनों मेथड को कॉल किया है. सो व्हाट शुड आई गेट इन द आउटपुट? एचडीएफसी क्रेडिट, एचडीएफसी डेबिट, these two statement, statement number 10, statement number 13. Now to use the method from this ICICI class, what I need to do is I need to create object of this class, right? So creating the object of this class, giving the variable name, anything variable name you can give. I'm giving is a simple IC, then keyword new, again the class name. Here we have created the object. Now if I will use this variable IC to call method from the ICIC class, you can see both methods are available. Both methods are available. Now this time if I will run this code, I will get the additional method from this ICIC class as well. Okay, that is ICICI credit and ICICI debit. Okay, spelling mistake. Okay. Any doubt in this? Sir, can we pass the arguments in the uh, methods? Definitely, if we have defined in that method like that only. But यहाँ पे मैंने कोई मेथड जैसे था ना, ओवरलोडिंग, ओवर फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग, हमने जो मेथड देखे थे उसमें मैंने ऑलरेडी जब क्रिएट किया था मेथड तभी मैंने उसके आर्ग्यूमेंट दिए थे, लाइक सिग्नेचर. हियर आई एम नॉट गिविंग द सिग्नेचर. Okay, sir. ओके ओके, अब ये तो कंसेप्ट इजी लगा आपको, ओके? बट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? तभी हमने किया क्यों एग्जैक्टली? हम्म इसमें सर पेरेंट क्लास हम्म एक ऑब्जेक्टिव तो सर डेटा हेडिंग की इसमें. डेटा हाइडिंग किया है इसमें, बट कहाँ पे मैं डेटा हाइड कर रहा हूँ इसमें? वेयर आई एम गोइंग टू ट्राइंग टू हाइड द डेटा? देन सर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है रीयूजेबिलिटी सर, कोड रीयूजेबिलिटी. ओके, पहले तो मुझे इस चीज का आंसर बताइए कि डेटा हाइडिंग कहाँ पे हुआ है इसमें? सर वी कैन नॉट कॉल द पेरेंट क्लास, वी ओनली कॉल द चाइल्ड क्लासेस. ओके ओके, that is one part of data hiding. Okay, again. ओके, कुछ अगर प्रैक्टिकली इसका यूज हो सकता है, इस चीज का क्या यूज होगा हमें? सर कोई अगर वेब एप्लीकेशन या कोई भी जो रहती है वो अपने कुछ डेटा को सेपरेट रखना चाहती है और डायरेक्ट ओपनली उसको किसी भी कोई अदर यूजर उसको यूज ना कर पाए, तो देन एक सिचुएशन है. ओके ओके ओके, लिसन केयरफुली नाउ. ओके, देखिए यहाँ पे डेटा हाइडिंग क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे कुछ मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, कुछ मेथड नॉर्मल्स होंगे. ओके, मे बी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट एटलीस्ट वन मेथड शुड बी एब्स्ट्रैक्ट. यहाँ पे मैं मेथड को हाइड कर रहा हूँ, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे यहाँ पे नहीं पता है. इन एब्स्ट्रैक्ट आई डोंट नो द इट्स इम्प्लीमेंटेशन. अब जो क्लास को उसको इम्प्लीमेंट करना है, दे आर फ्री टू इम्प्लीमेंट. टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस ओनली, यू नो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Yes, sir. Is it that like we can create an account in RBI and we can do the credit and debit activity? No, sir. Then what is the use of RBI? What RBI is going to perform? What RBI going to perform then?
ओके देखो, आरबीआई ये बैंक है, बट एग्जैक्टली इट इज नॉट फंक्शनिंग एज अ बैंक. इट इज गिविंग द गाइडलाइन टू द अदर बैंक्स. इट इज गिविंग द गाइडलाइंस टू द अदर बैंक. मान लीजिए आरबीआई ने गाइडलाइन दी है समथिंग अबाउट क्रेडिट एंड समथिंग अबाउट डेबिट. बस गाइडलाइन दी है. नाउ द नेक्स्ट क्लासेस मीन्स दूसरे बैंक को उसको इम्प्लीमेंट करना है, एंड दे कैन इम्प्लीमेंट बाय देयर ओन मेथड. मैंने एचडीएफसी की क्रेडिट मेथड में एचडीएफसी क्रेडिट लिखा है. आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस मेथड ओनली, बट इम्प्लीमेंटेशन इज डिपेंडिंग अपॉन लाइक दैट क्लास. हाउ दैट क्लास वांट टू इम्प्लीमेंट इट, दे कैन इम्प्लीमेंट इट. Similarly for ICICI, I'm following the guideline of the RBI. मैं किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूँ, बट इम्प्लीमेंटेशन मेरे तरीके से हो रहा है एज पर माई रिक्वायरमेंट. वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट बट एज पर द रिक्वायरमेंट. तो सिमिलरली जैसे मान लीजिए आपके टेस्टिंग में आपकी कुछ रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड होंगी, और इट शुड बी गेट फॉलोड, और इट शुड बी एक्टिंग एज अ गाइडलाइन. That time we have to include those requirement or those thing in the abstract class. मुझे abstract class में उसको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा. और जब मैं इसको implement करना चाहूंगा, when I'm going to implement it, मैं उसको multiple classes में implement कर सकता हूँ. Okay? तो abstract class बस आपको क्या देगा, it's just giving you the guideline. It's just giving you the guideline. Now in case if there is no abstract class, मान लीजिए आरबीआई बैंक नहीं है अब, then what will happen? These bank will implement their own rule. उसमें कुछ governance नहीं रहेगा, right? They are not going to follow something which is given by the higher authority. सिमिलरली यहाँ पे अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होता है, हम सिंपली एक क्लास में किसी को एक्सटेंड करना चाहते हैं कोई अदर क्लास को, सिंपल इट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, तो वहां पे क्या हो, स्ट्रक्चर नहीं रहेगा. देयर विल बी नो एनी स्ट्रक्चर. नाउ हियर वी कैन सी द स्ट्रक्चर लाइक दो दीज आर द डिफरेंट क्लासेस. एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ये डिफरेंट क्लासेस है, बट दे आर फॉलोइंग द स्ट्रक्चर गिवन बाय सम एब्स्ट्रैक्ट क्लास. सिमिलरली जब हम देखेंगे इसका एक्चुअल यूज, तो आपको पता चलेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैंने जो भी गाइडलाइन यूज किए है, मेंशन किए है, उनको मैं प्रॉपरली यूज करूंगा मेरे नेक्स्ट क्लासेस में. जो भी मैं क्लास क्रिएट करूंगा एज पर माई रिक्वायरमेंट, उसको मैं सिस्टमेटिकली यूज करूंगा. अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होता है तो यू विल नॉट गेट कि क्रेडिट मेथड कहाँ से आ रही है, ये डेबिट मेथड कहाँ से आ रही है. ओके? और अगर वो किसी नॉर्मल क्लास में होगी तो यूजर कैन मेक इट एज अ कंप्लीट इन दैट क्लास ओनली. तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आप अपने तरीके से कैसे कर सकते हो. अगर ये क्रेडिट और डेबिट मेथड किसी नॉर्मल क्लास में प्रेजेंट होती, तो आपको बस ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको कॉल करना था. उसका इम्प्लीमेंटेशन आप उसको चेंज नहीं कर सकते एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट? इट बिकम्स द कॉन्क्रीट मेथड इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, यहाँ की जो क्रेडिट मेथड है, क्या आप इसको चेंज कर सकते हो इन फ्यूचर? No, right? Whatever you are given in that method body, it is going to execute. यहाँ पे आपने print statement दिया है, it will be getting like as a concrete method. But if in abstract class मैं कुछ method abstract define कर रहा हूँ, तो उसको मैं in future और next class में implement कर सकता हूँ as per my requirement. Just I'm trying to following the guideline. और मैं इसका base ले रहा हूँ, abstract class का base ले रहा हूँ, but उसका इम्प्लीमेंटेशन तो मैं मेरे तरीके से कर सकता हूँ. गॉट इट? इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर. ओके? और डेटा हाइडिंग दैट मीन्स, सी हम कुछ डेटा हाइड कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड में जो भी हम जो लिख रहे हैं ना, वो कंप्लीट कुछ भी नहीं है. इट्स टोटली इनकम्प्लीट. ये क्रेडिट मेथड जो है ये इनकम्प्लीट ही है. उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको जो मैं उसको ओपन करूंगा, दैट विल बी इन द नेक्स्ट क्लासेस. तो ये जो मेथड है, लाइक वी आर ट्राइंग टू हाइड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं यहाँ पे बता ही नहीं रहा हूँ. इफ एनीवन विल गो एंड सी द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इट विल नॉट गेट एग्जैक्टली व्हाट हैपनिंग इन क्रेडिट. बस मेथड है ये उसको पता चलेगा, बट व्हाट हैपनिंग एग्जैक्टली इन क्रेडिट, मतलब ये मेथड क्या ऑपरेशन करने वाली है, नो आइडिया. इट्स लाइक हिडन, but we are going to make it concrete in the next class. Got this concept of this abstraction? Yes, sir. Yes or no, guys? Okay.
Now the next concept we are going to see is that इंटरफेस. ओके, ये वर्ड मैंने कब बताया था आपको? While discussing the multiple inheritance. multiple inheritance. See this, right? What is the different types of inheritance we have seen? Single level inheritance and multi level inheritance. उसमें कोई डाउट नहीं है. फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास अगर प्रॉपर्टीज या फिर मेथड्स एक्वायर या एक्सेस कर रहे हो आप, तो उसको हम कहते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, SLI. अगर एक क्लास दूसरे में और वो दूसरा क्लास और किसी तीसरे क्लास में कुछ मेथड एक्सेस कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज अ मल्टी लेवल inheritance. And the next I am saying it is a multiple inheritance. Now Java is not directly going to support the multiple inheritance. Java multiple inheritance को support नहीं करता है. Anybody knows this? Why we are not going to support directly the multiple inheritance in Java? सर अगर हम दो क्लास को अगर इनहेरिट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो दोनों में अगर बाई चांस अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आया कि दोनों में अगर मेथड सेम हो, सेम नेम से, देन भी कॉल करेंगे तो उसमें भी शायद एरर जनरेट हो सकता है. ओके, वेरी गुड. देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक क्लास A है, ये क्लास है आपका, ये है B. ओके, एंड दिस इज योर क्लास C. अब इस क्लास में एक M1 मेथड है, राइट? M1 मेथड. And again in this class also we have the M1 method. Okay, we have the M1 method. Now listen carefully. देखो दोनों में मेथड सेम है, मेथड नेम सेम है. मान लीजिए उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ अलग होगा. We are not discussing the overloading or overriding concept here. बस क्लास A है, क्लास B है, दोनों में सेम नाम की मेथड है, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन मे बी द डिफरेंट. आई एम नॉट वरीड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन. नाउ देयर इज वन क्लास, sorry, now we have the next class, this is next class C. Okay, now what is happening? अब मुझे C में A की प्रॉपर्टी चाहिए और B की भी चाहिए. So what I will do here? अगर मुझे पता नहीं है कंसेप्ट इनहेरिटेंस का, तो मैं क्या करूंगा? I will try to extend this class A and class B. मान लीजिए इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, बट मान लीजिए मैं दोनों को एक्सटेंड कर रहा हूँ. मुझे इसकी भी प्रॉपर्टी चाहिए, इसकी भी प्रॉपर्टी चाहिए. नाउ यू विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास C and you will call the M1 method. Now JVM will get conflict which M1 method you are referring from which super class or parent class. Is it M1 from A or is it M1 from B? It will be get confused. देखो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप जब कॉल करते हो तो उसको तो इम्प्लीमेंटेशन तो पता नहीं होता. इट विल जस्ट ट्राई टू कॉल दी बाय दी मेथड नेम. मेथड नेम सेम है तो इट विल गिव द कॉन्फ्लिक्ट. So that's why Java directly not supporting the multiple inheritance. Multiple क्या हुआ? One child class, that is class C, is trying to acquire or is trying to access the two classes, class A and class B. तो class C के लिए class A और class B ये क्या हुए? parent class हुए. So at one time class C is not going to access the methods from class A and B at one time. That's why we are saying Java does not support the multiple inheritance directly. डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली करता है, वो हम देखेंगे, बट डायरेक्टली इट इज नॉट इन अ पोजिशन टू सपोर्ट द मल्टीपल इनहेरिटेंस. ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. Okay. Now to understand the concept of interface, okay, देखिए it's quite
डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट व्हाट एम्बिगियस, और इसमें डाउट आएंगे आपको, कुछ ऐसा कंसेप्ट है, बट फर्स्ट विल फिनिश द कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, then coding. At the end you will get the maximum idea. Okay, at the end we will get the maximum idea. Okay, but before that कुछ बेस डिस्कशन के लिए समझ लीजिए what we are discussing as a base. We are doing which course here? What is the name of this course? Manual and automation testing. Okay, so as a fresher, if you are completing this course, you will get a job. What is the role of your job? Test engineer. मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टर। Okay, so you'll join simple as a test engineer, right? It may be the first junior post. Okay, after that, after some year you will be senior test engineer. Is it right? Yes or no, guys? You're right, sir. Okay, sir. Again, with more experience you will become TL, right? Team lead, testing team lead. Okay, what is the job activity of test lead? हमने देखा मैनुअल में ना, what is the main activity the lead is performing? Lead verify the documentations. Yeah, the documentation is what? The main, उसका नाम है कुछ जिसको हम रेफर करते हैं while testing. SRS. Yes, SRS, sir. No, SRE is prepared by the test lead, is it? कुछ डॉक्यूमेंट लीड बनाता है जिसको हम रेफर करते हैं. Test plan. Yeah, it's a test plan, right? टेस्ट प्लान कौन क्रिएट कर रहा है आपका? टेस्ट लीड. Okay, is it that junior test engineer is going to prepare the test plan? No. No. What he will try to do, he will try to execute as per the test plan. Correct or not? Yes, sir. He will try to execute as per the test plan. He is not going to create the test plan, but वो execution जो भी करेगा, testing जो भी करेगा, वो test plan को refer करके ही करेगा. Okay? Is that like, again, generally test lead will not do the testing activity. He will try to document itself and he will try to prepare the test plan, which is what the guiding, or we can say one of the guidance to the remaining test engineers. जितने भी टीम मेंबर्स होंगे जो एग्जीक्यूट करेंगे उस टेस्ट प्लान को रेफर करके करेंगे. ओके, दैट इज द वन कंसेप्ट. अगेन टेक एग्जांपल ऑफ योर building construction. For example, if you want to take again one more example, there is one architect who is going to create the plan for the building. On paper he will try to create the plan. Is it like, अगर वो प्लान बनाए और आपको दे कि ये है आपका घर, you can enjoy, is it okay? No, we have to construct it. We have to construct it, right? तो construct खुद आर्किटेक्ट तो नहीं करेगा. He will just give the plan on paper कि आपके कितने फ्लोर चाहिए, क्या लोकेशन होगा, कितना एरिया होगा, whatever the requirement, he will make it the plan. And the remaining, okay, maybe the civil engineer or the builder, वो क्या करेंगे, उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? ओके, दे विल ट्राई टू एग्जीक्यूट. तो यहाँ पे एक समवट सिमिलर कंसेप्ट है. सो इंटरफेस इज ट्राइंग एज दी प्लान. इंटरफेस यहाँ पे क्या करेगा, इट इज वर्किंग एज अ प्लान. और जो रिमेनिंग क्लास होंगे, ओके, द रिमेनिंग क्लास, they are working as like a test engineer. okay, जहाँ पे वो क्या करेंगे, उसका एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे. सो इंटरफेस में मैं क्या करूँगा, जस्ट क्या करूँगा, I will try to give the plan itself. okay,
आई एम नॉट गोइंग टू गिव द करेक्ट आइडिया, मतलब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो प्लान में होगा, बट एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन की आप बात करोगे तो वो कहीं और होगा। ओके, सो इंटरफेस इज जस्ट लाइक प्लान इटसेल्फ। ओके, इट इज जस्ट लाइक अ प्लान इटसेल्फ। इस कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है नो सर। कि एग्जैक्टली इंटरफेस के बारे में हमने स्टार्ट कहाँ से किया? नो राइट? ओके, जस्ट वेट अ मिनट। Okay, so if I'm working with interface, can you hear me properly? Yes. Okay, so while working with interface, similar as abstract, we have to use the keyword as interface. मुझे ये keyword भी है। Okay, it is a predefined meaning, okay, in Java. So इंटरफेस, ये मुझे कीवर्ड यूज करना है। आई एम गोइंग टू यूज द कीवर्ड एज अ इंटरफेस। जैसे क्लास को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, वैसे इंटरफेस को भी मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। ओके, बट बिफोर दैट नेम वी हैव टू यूज द कीवर्ड एज अ इंटरफेस। मान लीजिए मैं इंटरफेस को नाम दे रहा हूँ वेब ड्राइवर। ओके, नाउ ये है मेरा इंटरफेस and it is acting as a plan. It is acting as a plan. अब इस प्लान में जो मैंने कुछ प्लान बनाया है वो सिंपल क्या होगा? इट्स टाइप ऑफ लाइक इंस्ट्रक्शंस। ओके, मान लीजिए वी आर परफॉर्मिंग लाइक ऑपरेशंस। ओके, लाइक पब्लिक वॉइड, एग्जाम्पल लाइक ओपन ऐप। मान लीजिए ये कोई एक्टिविटी है जिसके बारे में बस मैंने बताया है। ओके, आई एम नॉट गिविंग इट कंप्लीट आइडिया। देन अगेन आई हैव लाइक पब्लिक void like click activity which we are doing, so it's created as a one of the method. Okay, like that we have many more methods. Okay, okay, now देखो यहाँ पे मैंने इंटरफेस को क्या कहा है? इट्स जस्ट अ प्लान एंड इट इज गिविंग एन आइडिया अबाउट हाउ दिस शुड बी वर्क। ओके, तो यहाँ पे बस मैं उसको गाइडलाइन दे रहा हूँ। अगेन सेम एज दैट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे कंफ्यूजन मैंने वही कहा, you will get some similarity between interface and abstraction. At the same time you will face some difference also between this interface and this abstraction concept. देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, डिफरेंस पहला समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया है, यहाँ पे मैंने इंटरफेस कीवर्ड यूज किया है। ये तो डिफरेंस हुआ। सिमिलरिटी क्या हुआ? अगेन यहाँ पे बस मैं मेथड को डिफाइन कर रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। सिमिलरली हियर एज वेल we are just defining the method, not giving the any implementation. But इंटरफेस की खास बात यह है कि इंटरफेस में जो मेथड्स होते हैं they are by default the abstract method. They are by default the abstract method. देखो यहाँ पे मैंने abstract कीवर्ड यूज किया है, so I can directly say it as these are the abstract methods. क्योंकि मैंने क्या कहा था, abstract क्लास में एटलीस्ट वन abstract मेथड होनी चाहिए, बाकी रिमेनिंग आपकी नॉर्मल मेथड हो सकती है। सिंपल यू कैन हैविंग m1 मेथड m2 मेथड विदाउट abstract कीवर्ड। ओके, बट एटलीस्ट वन मेथड क्या होनी चाहिए? abstract, जिसका इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट ना हो और उसको मैं किसी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करना चाहता हूँ। But here in interface by default each and everything here it is treated as the abstract method only. आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बट जब मैं इंटरफेस ये कीवर्ड यूज कर रहा हूँ तो मुझे अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इसमें जो भी चीजें हैं एज अ मेथड दे आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट। दे आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट है मतलब उसको मैं कंप्लीट किसी और क्लास में करना चाहूंगा। आई विल ट्राई टू कंप्लीट इन दी डिफरेंट क्लास, है ना।
अब ये मेथड तो कॉन्क्रीट नहीं है ना, ये इनकम्प्लीट मेथड है। इसको मैं डिफाइन या कंप्लीट करूंगा किसी और क्लास में। I will try to complete or define them in a different class, but as of now in interface they are just giving some headlines कि open app एक method है, not with space, open app, click, send keys, मतलब मान लीजिए जो भी एक्टिविटी ओपन एप्लीकेशन, क्लोज एप्लीकेशन, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, और वो मेथड इनकम्प्लीट है कहाँ पे, इंटरफेस में। दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटेड और ट्रीटेड एज अ प्लान। प्लान में क्या होता है, बस चीजें डिफाइन होती है ना, चीजें डिफाइन होती है। अब उनको एग्जीक्यूट, अब इस मेथड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब क्या करूंगा, इसकी बॉडी डिफाइन करूंगा या इसको मैं कंप्लीट करूंगा किसी और क्लास में, किसी और क्लास में। मान लीजिए अब मुझे उसको क्या करना है, आई वॉन्ट टू मेक इट एज अ कॉन्क्रीट। अब उसको मुझे डिफाइन करना है, सो आई कैन क्रिएट अ क्लास, फॉर एग्जाम्पल आई एम क्रिएटिंग क्लास एज अ Firefox driver. You can give any name, right? You can give any name to the class. पता है आपको, है ना? We can give any name to the class. Okay. Now what I will do? As I said in next class, I want to complete that method. जो ये जो abstract method थे, by default abstract है ये। यहाँ पे मैंने abstract keyword लिखा नहीं है, but from the interface word I am getting like all these method are abstract only. यहाँ पे आपको कोई भी एक सिंगल मेथड भी नहीं मिलेगी जिसको बॉडी होनी चाहिए। ओके, वी विल नॉट गेट इट। सो हियर वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट लाइक पब्लिक void any method from the abstract like open app, ये मेथड है। ओके, नाउ आई वांट टू कंप्लीट इट, मींस अब मैं इसको क्या करूंगा, स्टेटमेंट्स दूंगा और एनी इंस्ट्रक्शन। These are simply what the code or instruction I can say, and I will complete that method. देखिए इंटरफेस में मैंने क्या किया है, आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट एज अ प्लान। तो उस प्लान में मैंने बस मेथड लिखी है विच आर बाय डिफॉल्ट दी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो मुझे ये पता चल गया है कि ये मेथड कंप्लीट नहीं है। इनके लिए बस मैंने नाम दिया है, there is no any implementation, just sentence complete. Similarly click, अगर कुछ एक्टिविटी है तो उसकी भी मैंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी है। अब इन सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मैं किसी और क्लास में क्या करना चाहूंगा, कंप्लीट करना चाहूंगा। सो मैंने यहाँ पे मान लीजिए जैसे एक मेथड कंप्लीट की है ओपन ऐप, you can again add all these methods which are having in the interface, okay, which are having in the interface. अब ये मेथड कहाँ से ले रहा हूँ मैं एग्जैक्टली, these abstract methods are from which place, from this interface web driver. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे किसी नॉर्मल क्लास को मैं नॉर्मल क्लास में मैंने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, बैंक जो क्लास था उसको क्या था, हमने एक्सटेंड किया था। बट हियर अगेन द सेकंड डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस जैसे मान लीजिए कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट यूज किया है, कीवर्ड इंटरफेस किया है। सो हियर वी कैन नॉट यूज द कीवर्ड एक्सटेंड्स। सो टू इम्प्लीमेंट द मल्टीपल इनहेरिटेंस वी हैव टू यूज वन अनदर कीवर्ड। व्हाट इज द नेम? दैट कीवर्ड नेम इज इम्प्लीमेंट्स। जैसे एक्सटेंड्स कीवर्ड था, तो जब मैं इंटरफेस से डील करूंगा तो मुझे एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज नहीं करना है, मुझे क्या कीवर्ड यूज करना है, इम्प्लीमेंट्स एंड द नेम ऑफ दैट इंटरफेस। नेम ऑफ दैट इंटरफेस इज व्हाट? वेब ड्राइवर। नेम ऑफ दैट इंटरफेस इज व्हाट? वेब ड्राइवर। यू विल फेस सम सिमिलरिटी आल्सो। अब सिमिलरिटी जैसे वहां पे क्या था, सिमिलरिटी क्या क्या होंगी, व्हाट इज द सिमिलरिटी? फर्स्ट कि मेथड क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड से, एंड दीज मेथड्स यू आर गोइंग टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। ये दोनों में हुआ था, एब्स्ट्रैक्शन में भी हुआ था और इंटरफेस में भी हो रहा है। डिफरेंस क्या था, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे इंटरफेस कीवर्ड यूज हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया था to get the methods from the abstract class. Here I am using the implements keyword to get the methods from the इंटरफेस। तभी तो मैं जाके ये ओपन एप्लीकेशन मेथड है ये यूज कर पाऊंगा।
and same as that of abstract, we cannot create an object for interface. मैं इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता हूँ. Okay, we are not in a position to create the object for the interface. Okay, now यहाँ पे मैंने जो भी ये प्लान है ना, ये अभी मैंने एक क्लास में किया है इम्प्लीमेंट. मान लीजिए जैसे आपका टेस्ट लीड जो है, टीम लीड, ही इज ट्राइंग टू गिव अ यूनिक प्लान. प्लान एक है आपके पास इंटरफेस. अगर आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो इन योर टीम यू मे हैव मोर देन वन टीम मेंबर. So one team member will execute some part, again second member will execute some part, again third member will execute some part. Similarly यहाँ पे भी इस इंटरफेस को मैं एक से ज्यादा क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. ओके, यहाँ पे मैंने एक क्लास में इम्प्लीमेंट किया है. मान लीजिए कि अगर मैं और के क्लास बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए क्लास क्रोम ड्राइवर, उसमें भी मैं वेब ड्राइवर को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. अब यहाँ से एक डेफिनेटली एक आपका जर्नी स्टार्ट होता है फॉर दिस सेलेनियम. देखिए सेलेनियम वेब ड्राइवर हमने सुना था नाम, राइट? हैव वी heard this term web driver? Yes, sir. It's one of the component from the Selenium, right? What is the first component? Selenium ID. What is the next component? Selenium RC. What is the third component? That is the web driver which we are using, Selenium web driver. Okay, and the advance or the next concept is Selenium grid. Okay, so देखिए, this is again we can consider as a one type of automation tool, Selenium web driver, है ना? Now web driver, it get implemented by many drivers like Firefox driver, Chrome driver, Internet Explorer driver, like there are many drivers. Okay, अब वो drivers क्या होते हैं और ये concept कैसे होता है implement in actual practice, that we are going to see in next class. Okay, but as of now just understand what is interface. Simple interface is like acting as a plan. Okay, एक प्लान की तरह काम करेगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसे बोलते हैं ना, इसका डिटेल जो भी काम हो रहा है वो किसी अदर क्लास में हो रहा है. और यहाँ पे हम इंटरफेस है इसलिए उसको एक्सटेंड यूज नहीं करते, उसको कीवर्ड यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं हम? इम्प्लीमेंट्स. और ये जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट भी मैं आपको थ्रू इंटरफेस दिखाऊंगा. ओके, थ्रू इंटरफेस. फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अब ये क्लास सी है और ये ए एंड बी, दीज आर नॉट द क्लास, दीज आर द इंटरफेस. मान लीजिए ए एंड बी अब क्या है? इंटरफेस है. अब ये जो क्लास है आपका सी, ये दोनों को इम्प्लीमेंट कर सकता है. आई एम नॉट सेइंग एक्सटेंड बिकॉज दीज आर नॉट नॉर्मल क्लासेस. नो, अब मान लीजिए नॉर्मल क्लास नहीं है, क्लास आपका ए भी इंटरफेस है और बी भी इंटरफेस है. हियर वी कैन राइट सी इम्प्लीमेंट्स ए एंड बी. ए एंड बी व्हाट? दे आर द इंटरफेस. अब इस टाइम में क्या होगा? ये कंफ्यूज नहीं होगा. इट विल बी नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू मेथड्स और जो सेम है. Why it will not get confused? What is the exactly happening in this class C when we are trying to implement the interfaces A and B? What will happen? वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना? जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये जो है यहाँ पे ओपन ऐप नाम का जो है ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसको मैं फायरफॉक्स क्लास में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ और कोई क्रोम ड्राइवर क्लास में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, है ना? That we are going to see without any ambiguity, it will work fine. बट यही अगर हम एक्सटेंड करना चाहेंगे तो इट विल बी गेट कंफ्यूज कि आप किस क्लास की बात कर रहे हो, क्लास मेथड की, M1 की, M2 की, while we are trying to extend both class at one time. बट इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू इनहेरिटेंस, तो इंटरफेस इट विल नॉट गिव एन एरर. ओके, दैट वी विल टेक केयर. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो. सो एज पर द प्लान, जब ये आपका ओप्स कंसेप्ट खत्म होगा विद द हेल्प ऑफ दिस इनहेरिटेंस, सॉरी इंटरफेस, then last concept we are going to see from the core Java is that exceptions handling. Okay, and after that we will try to cover the main concept of the Selenium. अगर आप इन सभी कॉन्सेप्ट के साथ वेरी
क्लियर हो और कंफर्टेबल हो, तो वाइल वर्किंग विथ सेलेनियम इट विल बी वेरी इजी टू यू। ओके, अभी तक भी आपके पास कुछ एम्बिग्यूटी होंगे कि हम जो सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसका एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन सेलेनियम के साथ कैसे होगा। डोंट गेट वरीड, ओके। एज ऑफ नाउ योर टास्क इज टू गेट कंफर्टेबल विद दीज कंसेप्ट्स, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि जब मैं सेलेनियम पढ़ाऊंगा तो मैं इन कंसेप्ट को अगेन रिपीट नहीं करूंगा। आई विल कंसिडर लाइक ये बेसिक जावा का आपको कंसेप्ट पता है। ओके, सो आई अगेन मैं वहाँ पे इंटरफेस क्या था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म क्या था, वो अगेन रिटर्न नहीं बताऊंगा। यू विल गेट एन आइडिया कि ओके यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म नाम का कंसेप्ट यूज हुआ है और नहीं। गॉट इट? सर बोलिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में मतलब वो नाम छोड़ के फंक्शनैलिटी वाइज क्या डिफरेंस है? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अभी आपके पास कंफ्यूजन बहुत होंगे। यू आर फाइंडिंग सम सिमिलरिटीज, यू आर फाइंडिंग सम डिफरेंसेस एज वेल। अब ये सिमिलरिटीज आपको वही से लग रही है ना। यू आर ऑल्सो कंसिडरिंग कि दिस इज वन ऑफ द माई व्हाट दिस इज वन ऑफ माई लाइक आरबीआई, जैसे मान रहे थे ना, इट इज गिविंग यू सम गाइडलाइन एंड यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट। यस। बट उसका कुछ डिफरेंस है, वो हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। बिकॉज यहाँ पे कुछ कीवर्ड डिफरेंस आए तो उसका कुछ मीनिंग होगा फॉर श्योर। वहाँ पे मैंने एक्सटेंड यूज किया था, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो समथिंग इज डिफरेंस देयर दैट वी विल सी थ्रू कोडिंग। अभी भी आपको जब कंसेप्ट बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। यू विल फील बोथ आर सिमिलर फंक्शनलिटी वाइज। यहाँ पे भी मैं इसको कंक्रीट मेथड को कंप्लीट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने वही किया था। बट एग्जैक्टली हाउ इट इज गोइंग टू गिव एट द एंड, जो आउटपुट आएगा ना, दैट यू विल गेट सम डिफरेंस। ओके, डेफिनेटली while working with the abstraction and while working with the interface that we are going to see। इसलिए ये concept थोड़ा complete होने तक patience रखिए, you will get an idea exactly how it is going to differ from the abstraction। okay ओके सर। और कोई डाउट है किसी को? नो सर। no okay, so again we will meet on the same time tomorrow। okay, thank you guys। Thank you.